बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ अक्रिंगटन, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी यूके की थोड़ी थोड़ी सैर करवाता चलूँ। आज मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है, सूरज अपने पूरे आबोताब से रोशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, खूबसूरत नीला आसमान और छोटे छोटे टुकड़े बादलों के भी। तो चलें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपने साथ घुमाता फिराता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको यूके में बताता चलूँ कि सरसब्ज़ो शदाब होने की ज़्यादा वजह क्या है, कि यहाँ पे क्यों इतनी हरियाली है। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारा पहाड़ी इलाका है और ठंडा इलाका है, और यहाँ पे बारिशें जो हैं तकरीबन आए रोज़, बल्कि हर रोज़ ही होती हैं। जिस दिन धूप निकले उस दिन ऐसा ही है जैसे आज चांद कहाँ से निकला हो। तो चांद की जगह सूरज निकलता है, जैसे एक खूबसूरत मुखड़ा आपके सामने आपको नज़र आता है। इसके चारों तरफ, यूके के चारों तरफ समुंदर है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप साइड पे पार्क करके ब्रेकडाउन कवर को कॉल करते हैं। जैसा कि ये पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, वो ख़राब हो गई है, तो आप ब्रेकडाउन कवर को कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ये पूरा यूके कह लें कि पहाड़ों पे ही बना हुआ है। आपको अगर तस्वीर में नज़र आ रहा हो तो दूर दूर पहाड़ हैं, और जिन रोड्स पे हम जा रहे हैं वो भी सारे के सारे पहाड़ों पे ही बने हुए हैं, और कोई भी स्ट्रेट रूट नहीं है। दरख्तों की भरमार है, ऑक्सीजन बेइंतहा है, और आप भी इन सरसब्ज़ो शादाब पौधों की तरह सरसब्ज़ और शादाब रहते हैं। मैं जा रहा हूँ अक्रिंगटन की तरफ को। सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कि आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इन पे मुकम्मल तौर पर घर बने हुए हैं। जैसा कि अभी हम एक समझ लें कि पहाड़ के ऊपर ही हैं, और ये घर जो हैं ये पहाड़ के ऊपर सारे बने हुए हैं, लेफ़्ट राइट बोथ साइड्स। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, जितनी मर्ज़ी बारिश हो यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता।
ओके गाइस, तो मैंने एक जॉब फिनिश कर ली है। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी जॉब की तरफ। आपको अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये अंधेरा नहीं बल्कि सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डार्क आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे मौसम का बिल्कुल पता नहीं लगता। तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी जॉब पे टुवर्ड्स मैनचेस्टर, तो I'll try to make video over there as well. तो गाइज, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो चुकी होंगी। अब मैं पहुंच रहा हूं मैनचेस्टर के एरिया साल्फर्ड में। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ सके तो एक शख्स विंडो साफ कर रहा है। Sorry guys, can't be able to make video due to there are more workers, they are working all over. Assalamualaikum. Okay, hi guys, so I am going to tell you what I learned in school today. So basically, first obviously we read some books. I read The Case of the Mystery Pearl, and then after that we did singing assembly where we went inside the hall and did some singing with Mrs. Edwards. After that we went in and we did some reading, so basically art. So in reading we learned about Rose Ailings Elise and Emmanuel Overbussy. Those are the two people we learned about. And then after that we went on to English. So we went learning challenge. Yes, learning challenge. We did some things about like maps and things, and we circled Bolton or Bury, and we wrote a line and wrote Bury or Bolton is in this area or that area, England or whatever, and how many miles it's away from. In case you're in a different country, like in America, it is this many miles away from, you know? After that, we did do English. Now in English, we are writing a diary. So we made a plan and we are focusing on the book of The Incredible Book Eating Boy. If you guys heard of it, put a book down below with a boy. So we made our little plan with the introduction. I drew a picture
because he's got like a roller coaster of feelings and emotions and things. Like first, he felt like he was the smartest person on earth. Then he felt a little bit. Then he felt like very confused and muddled up, and he kept using gibberish words like 1 + 1 is anything, 2 + 2 is 29. He kept on getting muddled up. After we did our introduction, page 1, page 2, page 3, we went on to lunch. After lunch, we did some DT. So in DT, we're learning about seasonality and things, you know. So we are all, and we've learned about this new person called Heston Blumenthal. Yes, he is a very scientific, experimental person. He makes foods. He makes food that are made out of something else, like carrot, for example, but it's not actually made from carrot. It's made of something else, like maybe cake or juice. And it looks so real, but it's not. It's artificial. It's not. Yes, so we learned about him. You can Google him as well. You can find the name again. I just said It's on craft. after that, and next week we are also going to be making soup because we learned about him, of his foods and things, you know. And we are going to be making soup. So Elon Musk is on craft. So we are going to be making soup. Link to that video of food. And then we just read The Witches, 3 pages. I sharpened some pencils, and then that's all I did at school. No, Yeah. it's on Legend Street. So if you want to know the Okay. ये बहुत बातें करती है. अगर इसको सारा दिन सारी रात भी छोड़ दिया जाए तो इसकी बातें ख़त्म नहीं होंगी. अब हम मस्जिद के बाहर पहुंच चुके हैं. Shayan, you want to say something? I don't know. Okay, guys, let's say Allah Hafiz to this short clip, and then we can go. Okay. 1, For 2, today's, आज के लिए हम सबको इजाजत दीजिएगा. हमारे चैनल को लाइक, share, subscribe, comment, और आप अपने and don't forget to press the bell icon. यस आप अपने प्यारों का, अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. हम सबको इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.